Assalamu alaikum. So let's Walaikum begin the assalam. session. Dr. Usman, Dr. Noman. We are going to start with the first scenario. So Dr. Usman, you will be responding to this scenario. Yes. Um, a 40-year male patient has presented to you, presented in the emergency department with a history of a repeated episode of the vomiting, abdominal pain. He's confused. Now, how are you going to approach this patient? Now, first of all, because he is vomiting and he is confused, I would like to first of all resuscitate the patient. And after taking thorough history and a clinical examination, I will pass 2 IV lines. And What will you ask during the history? I would ask about the nature of the vomiting, whether vomiting is projectile, and what is the color of the vomitus, and what is the how many episodes of vomiting. He has So any history of he has started alcoholism. vomiting for the last 1 day, and it's non-bilious with it's a 6 to 7 episodes. Okay, is there any other abdominal symptoms? I would like to ask him about. He is complaining of the abdominal pain as well. I would like to know the what is the area of abdominal pain and what is the level of his consciousness, because you told that he was unconscious. I would like to know his vital signs. What is his pulse? What is his blood pressure? Pulse is 100 per minute, and the blood pressure 110/70. 1070. And I would see what is the consciousness level of this patient. Is he Patient is conscious, but GCS? he is confused. But he is he is confused. He is not oriented. Okay, I would like to get his complete after I will continue with the resuscitation and complete metabolic profile of the patient. I will get his electrolytes, his So what are you urea creatinine, suspecting? What are you suspecting in this patient? because he has abdominal pain and vomiting. I am suspecting some GIT problem in this patient, and Okay. also I would like to have electrolytes of the patient. So what are you suspecting? He has abdominal pain. I'm suspecting that probably he has hypercalcemia, uh, Why hypercalcemia? So he's having abdominal because pain with vomiting. Yeah. he is having abdominal pain and he is 60 years old, Mm. and he has a normal vital signs. So I would like to do ultrasound of his abdomen to see. I would do general physical examination of the patient to see any enlarged swelling. I would also like to know the history about any drugs, any alcohol intake, any constipation, and urinary or bowel complaints. So there's a history of the constipation as well. He has his history of. I would also like to know the any drug history. Is he taking any drugs or any chronic illness? Chronic illness like You are not audible. yes, chronic illness. Chronic illness. The patient was initially hypertensive and diabetic as well. Okay, he had been taking antihypertensive drugs. Yeah. I would, okay, then I would like to know his renal function test, sodium, potassium, and urea creatinine. I would also like it to know the electrolytes, calcium, magnesium, and phosphate. And And calcium is uh, calcium. Which calcium? I, along with albumin, free calcium, Free ionized calcium. calcium and Yes, total calcium. and So the total yes. calcium is calcium is 3.5 millimole per liter. Okay, it means that he has a hypercalcemia. So I would like to know the causes of hypercalcemia. He might have taking calcium drugs. I would like to know parathyroid level, serum parathyroid levels, and I would also like to know So the 24 hours urinary. PTH level is 800 picogram per.
Okay, I would also like to know whether it is primary hyperparathyroidism or it is secondary hyperthyroidism. I would also like to know 24-hour urinary calcium levels, calcium and creatinine So ratio. 24 hour urinary collection, it's 300 millimole in 24 hours. Okay, then I would like to examine his neck and ultrasound of. I would like to know get the ultrasound of his neck along with the ultrasound of cervical lymph nodes and see whether there is any diffuse Ultrasound, there is hyperthyroidism. no ultrasound, there is no abnormality detected on the ultrasound of the neck. Okay, thyroid and hyperthyroid, they are normal. Yes, they're the normal, there's no abnormality detected. Okay, then I would like to do SESTI scan to localize the hyperfunctioning parathyroid gland because serum parathyroid level is high, and I would like to. Okay, so maybe scan is also negative. Okay, then I would also like to work up for his potassium level is normal Yeah, and sodium is also normal, sodium is normal. and he has been taking antihypertensive. Which antihypertensive drugs? I would like to know which antihypertensive drugs Calcium channel he has. blocker. Calcium channel blockers. He has been taking calcium channel blockers. I would like to know the other causes of abdominal pain, such as he has upper abdominal pain or lower abdominal pain or Having generalized. a diffuse abdominal pain, we are unable to localize it. Okay, then I would like to do the ultrasound of abdomen to rule out any uh, 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 intra-abdominal findings, and What are I you would like to suspecting? do. The radiologist is asking you. So, what do you want from the radiologist? What are you suspecting? I would like to know that what is the condition of adrenal glands? Are they normal? Their size is normal, and Adrenal glands. Okay. yes, and Yeah. also kidneys. Uh, Kidney. yes, So yes, and the left kidney has been removed. okay. Why it was removed? Sorry, but it's not. No. The kidney is in place. Sorry. Hello. Then I would like to So do the yes, uh, because patient is having a persistent vomiting, uh, and what is his condition now after resuscitation? you started with the IV fluids. Uh, Yes. so then it slightly improved with the IV fluids. Okay, I would give diuretics to the diuretics and Mhm. antiemetics, and Okay. I would also like to lower the calcium with the bisphosphonates Mhm. and uh, uh, Okay. di Okay. This patient underwent. Okay. Let just give. This patient underwent the renal transplantation 2 years back. Okay, then it means that patient is having a tertiary hyperparathyroidism, but his both nephrectomy was done, and No, renal you are telling that he transplantation. has one kidney. No, not No. nephrectomy. Renal transplantation. He underwent the renal transplantation. Okay, then he should have three kidneys. Was also asking about uh, ultrasound abdomen. He has renal transplantation. Then, so patient has a tertiary hyperparathyroidism, and Now, what will you do? it is a non-surgical disease, and patient has to be managed by endocrinologist because there is no role of surgery in tertiary parathyroidism. Okay. And Thank you, okay, Dr. Khan. Sir Numan, can you अच्छा comment उसमें on? थोड़ा सा एक तो शफाकत ने मुझे फंसाने की बड़ी कोशिश की है Hmm. थोड़ा सा ना तू शुरू में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लगा मुझे मतलब तू हिस्ट्री से अचानक तूने इलेक्ट्रोलाइट्स पे जंप किया फिर इलेक्ट्रोलाइट से तू फिर वापस हिस्ट्री पे आया तो हिस्ट्री में चाहे वो जो भी दे ना हिस्ट्री में उसके sir. तीनों कंप्लेंट्स को आप
तीनों कंप्लेंट्स को आप थोड़ा वो मतलब वॉमिटिंग है जैसे तूने बताया ना, तूने एब्डोमिनल पेन का कोई जिक्र नहीं किया कि एब्डोमिनल पेन को मैं मतलब उसकी हिस्ट्री लूंगा कि वो कब से है, कब से स्टार्ट हुआ है, सिवेरिटी कैसी है, और मतलब उसके एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स कैसे हैं, और इसके अलावा कि पहले भी कभी एब्डोमिनल पेन होता है कि नहीं होता। इसके अलावा तीसरी चीज़ उसने कन्फ्यूजन बताई है, तो कन्फ्यूजन भी कि कब से कन्फ्यूज्ड है, और इस कन्फ्यूजन के दौरान उसने क्या मतलब उसकी क्या वो है प्रेजेंटेशन है, और पहले भी कभी इस तरह के एपिसोड हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री में तूने ये चीज़ें बाद में तूने की हैं। पास हिस्ट्री, जैसे पास हिस्ट्री ड्रग हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, पास हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, और स्मोकिंग स्मोकिंग। तो ये तू बाद में फिर वापस इस पे आया। बाकी एग्जामिनेशन का भी तूने कोई खास एब्डोमेन का जिक्र मेरे ख्याल में पता नहीं, एब्डोमेन एग्जामिनेशन का जिक्र उस तरह नहीं किया कि मैं एब्डोमेन को प्रॉपर एक दफा एग्जामिन करूंगा और सारा उसको। यस तो उसके बाद ये था कि तेरा ठीक है, बाकी अपना टेस्ट टेस्ट तूने कराए। टेस्ट में भी इस तरह डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट पे जाने की बजाय ना, आप मेरे ख्याल में कह दें कि बेसलाइन एंड अलोंग विद द बेसलाइन आई विल गो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह जो भी। तो इस तरह मेरे ख्याल में डायरेक्ट जाने की बजाय। और सही है। अच्छा, इसने शवाकत ने 3.5 बताया, मेरे ख्याल में 3.5 तो इमरजेंसी होती है उसमें, तो आप कहें कि पहले मैं फौरन, ऐसे ही है शवाकत उस, हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें तो आप फौरन कहें कि मैं फौरन पेशेंट को पहले मैनेज करूंगा विद आईवी फ्लूइड्स एंड ये लेसिक्स वगैरह शायद देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं आप फ्यूरोसिमाइड थोड़ा। देते हैं हम्म, और मतलब बिस्फोस्फोनेट्स बाकी देते चीजें हैं। तो बाकी चीजें तो बाद में जाएंगे, सिस्टम भी पे हम्म, पहले तो कहें पेशेंट सीरियस है इस वक्त ना, 3.5 के हम्म, साथ। तो पहले मैं इसको आईसीसी में दाखिल करूंगा, इसको मैं एक्सटेंसिव उस पर आईवी फ्लूइड्स और मॉनिटरिंग और मेडिकल स्पेशलिस्ट की मदद लूंगा, और मतलब एक दफा जब स्टेबल होगा फिर उसके बाद आगे चलेंगे इसकी कॉज देखने के लिए। हम्म। तो ये था। बाकी इसके अलावा अ, बाकी सिस्ट मीबी स्कैन पे अगर नेगेटिव है तो मेरे ख्याल में कोई ये जो करते हैं सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग, और ये इसका रोल है इसमें। अगर मीबी स्कैन नेगेटिव आए तो सिस्ट, ये जो एक चीज लिखी हुई है सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग। सर वो प्राइमरी एडिनोमा डायग्नोस करने के लिए अब ये जो डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया है, जो टर्शी हाइपरथायराइड पैराथायराइडिज्म में, मेरे ख्याल इसमें नहीं है वो। सर वक्त क्या ख्याल है आपका? लेकिन ये तो बाद में उसने बताया ना, ये उसने बाद में बताया। हाँ, जैसा सर ने भी बताया ना, स्टार्ट में देखें, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द वॉमिटिंग, abdominal pain, and the patient is confused. So आपने हम्म, just think about the common causes. Common causes, it could be acute pancreatitis, any abdominal emergencies. So हम्म, treat, हम्म take this patient as it's an acute abdomen and treat हम्म, him in that line. ठीक है? जब आप उनको कराएंगे, you need to resuscitate. Obviously आप कराएंगे सब कुछ, everything is normal. मैं आपको दे रहा हूँ, देता जाता हूँ, आप मुझे पूछते जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा. Then you start हम्म, thinking about the electrolyte imbalance कोई हो सकता है. ठीक है? हम्म, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इट्स वेरी रेयर के उसके इस प्रेजेंटेशन के साथ आएगा पेशेंट. ठीक है? तो आपने पहले अपने नॉर्मली उसको फॉलो करना है, देन मूव ऑन टू दिस. और वैसे भी हिस्ट्री के अंदर एक दो चीजें मेरे ख्याल है हमें पक्की जो ना ऐड कर लें, कि जिस तरह ड्रग हिस्ट्री, प्रीवियस कोई हम्म। सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है? मेडिकल सर्जरी का, हाँ। कोमॉर्बिड्स, ड्रग हिस्ट्री एंड प्रीवियस सर्जरी. ठीक है? हम्म, हम्म तो उसमें काफी चीजें जो कवर, जब आप कहेंगे एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी, तो फिर देन एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि यस दिस पेशेंट हम्म, अंडरवेंट द रीनल ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है? एनीवे, अब आपने जब कर लिया कि जो अब जिसमें इस तरह से पेशेंट आया थी वॉमिटिंग विद डोमिनल पेन, कंफ्यूजन उसके साथ है आपको, बाद में जब आपने पूछा जी कैल्शियम लेवल कराऊंगा तो 3.5 है. आपने इनिशियल उसी तरह करना, यू स्टार्टेड ऑफ विद रिससिटेशन, और उसके साथ बाकी एनजी4 आपने डाला सारा वो करने की, आउटपुट उसकी मॉनिटरिंग की. जब सीवियर हाइपरकैल्सीमिया है, इट्स मोर देन 3.5, इट्स एन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी. 3.5, राइट? हम्म, तो 3.5 से ऊपर तक यू नीड टू स्टार्ट अप विद एग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, जिसमें अपने अप टू 500 ml पर आवर के हिसाब से देना. टारगेट यूरिन आउटपुट शुड बी मोर देन 100 हंड्रेड ml पर हंड्रेड आवर. एम एल पर आवर। So once the urine output has been established, then you add on the loop diuretics. वो देते हैं ताकि उसकी कैल्शियम जो ना वो नॉर्मलाइज हो. ठीक है? तो दिस इज इमरजेंसी, पहले आपने इसको डील करना है. नाउ आपने फिर देन यू हैव टू फॉलो द एल्गोरिथम. सो देयर इज हाइपरकैल्सीमिया. सो व्हाट्स द कॉज? You need to get the PTH level along with PTH, phosphate level, vitamin D level, and alkaline phosphatase, and 24-hour urinary collection, urinary calcium,
एंड क्रेटिनिन क्लियरेंस यू नीड टू, वो भी आपने अपने स्टेट पे आपने बता दिया। अब इससे जो डाटा आपको मिलेगा, so it's the PTH is raised, so that means it could be a primary hyperparathyroidism or it could be a हाँ familiar सेकेंडरी familiar, वो भी हो सकता है। फैमिली। हाँ ठीक जी। है, अगर ये नॉर्मल देता हूं मैं कि पीटीएच नॉर्मल है या उसके जो लो है, तो वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या दूसरी वाली कॉजेज में चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं दे दिया आपको पीटीएच लेवल रेज्ड है, तो इट कुड बी अ फेमिलियल हाइपो कैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है, टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी सेम प्रेजेंटेशन इस तरह ही होगी, कैल्शियम रेज होगा, पीटीएच लेवल भी रेज होगा, फॉस्फेट लेवल जो ना वो आपके उसमें लो होंगे। ठीक है, तो उसमें से हिस्ट्री से हमें पता चलेगा प्रीवियस इसको कोई सर्जरी रीनल ट्रांसप्लांटेशन कितनी की हिस्ट्री, जब रीनल ट्रांसप्लांटेशन की है उसमें नो लोकलाइजेशन कोई स्टडी आपने नहीं करवानी, क्योंकि इट्स डिफ्यूज डिजीज, उसमें फोर ग्लैंड एक्सप्लोरेशन और सर्जरी है इसकी ट्रीटमेंट। टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म 1 ईयर के बाद जो पेशेंट जो इसका है ना, इसकी सर्जरी है। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है जो कि बिकॉज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज, बिकॉज ऑफ द विटामिन डी जो डेफिशिएंसी उसकी वजह से पीटीएच लेवल जो है ना वो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की वजह उसमें कैल्शियम कम होगा। उसके अंदर ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है कि आपने विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट देने हैं और सीना कैल्साइट देना है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर पेशेंट या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव बेहतर नहीं हो रही, सारे उसकी सिम्टोमेटिक है, तो फिर इंडिकेशन है इसकी अगेन उसमें भी जो नेक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसलिए देखें नोडुलर डिजीज तो नहीं है। अगर नोडुलर डिजीज होगी तो मेडिकल मैनेजमेंट वो काम नहीं आएगी, वो भी इंडिकेशन बनती है सर्जरी। ठीक है, तो ठीक है। टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल उसमें इंटरवेंशन क्या तो सर्जरी बेसिकली, करते हैं हाँ टर्शरी में? हाँ सर, टर्शरी में क्या सर्जरी करेंगे? सर्जरी सर यही है, इसके थ्री जो सब टोटल जो पैराथायरॉयडेक्टमी ना, फोर ग्लैंड एक्सप्लोरेशन इसकी ना, सर्वाइकल, तो चारों निकाल लोकलाइज, के, हाँ, थ्री एंड हाफ ना, चारों निकाल के ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ये भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, हाफ को छोड़ दें और स्टिच लगा दें नेक में ही ना। और दूसरा है कि दूसरी ऑप्शन है कि उसको ऑटो ट्रांसप्लांट करें ब्रेकियोरेडियालिस में, और उसका रिकॉर्ड आपने रखना है, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, नेक्स्ट कभी हो तो एक्सप्लोर करना पड़े, तो इसमें परसिस्टेंट रिकरेंस भी हो सकती है। ठीक है सर, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ना, आई आई ट्राई टू मेक इट डिफिकल्ट के उसमें ट्रैप में उसको करने के लिए ना, कि ये उसको हो सकता है एग्जामिनर इस तरह ना करे, लेकिन आई थिंक वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नहीं नहीं, अच्छा है ये जो है ना, ठीक है, ताकि सादे आप, केस की बजाय ना। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा ना आपको सोशल ब्रेन स्टॉर्मिंग जो ना आपकी हो, और उसका जो डिफिकल्ट मैंने दिया, आई डोंट थिंक सो कि इतना का एग्जामिनर आपको उसमें लेके आएगा एक्चुअल जो सिनेरियो होगा इस तरह, मेरा नहीं ख्याल होगा। हाँ जी, ठीक रहेगा। हाँ, तो चलिए सर, नुमान आप फिर मुझसे पूछें। अच्छा, मैं पहले पूछूं? मैं, आप सोच लें, मैं, हाँ, एक एक चीज जो बात की सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग का, आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उस पर लोकलाइजेशन नहीं हुई, फिर हमने बीबी स्कैन भी करा लिया, नहीं हुई, तो फिर अब ये तो खैर वैसे भी रीनल जो रीनल ट्रांसप्लांट टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में तो लोकलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो भी कि आपने करा लिया नहीं लोकलाइज हो रहा, तो नेक्स्ट होता है 4D सीटी स्कैन है, 4 डायमेंशनल सीटी स्कैन, उस पे भी लोकलाइज नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइम आप सर्जरी करें तो यू गो फॉर दी फोर ग्लैंड एक्सप्लोरेशन के ऊपर। फर्स्ट में सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग नहीं है फर्स्ट टाइम में, अच्छा अच्छा, ठीक है। रिकरेंट उसमें वो है, तो उसकी अपनी मोबिलिटी और बाकी जो इश्यूज है ना। ठीक है सर, तो चलें अब आप सर पूछें। a 50 years old lady has been referred to you by the medical specialist. She's having headache, palpitations, and hypertension for the last 4 months. So how will you proceed with this patient? So the first of all, I will discuss with the medical specialist, and I will talk to him. So what is he suspecting in this patient? Obviously, keeping this information in mind, this patient having headache with palpitation and hypertension. So most likely, he will be suspecting a phaeochromocytoma in this patient, or some other adrenal pathology. And most likely, he has this patient. He would have referred for the surgical intervention. But I will take Yes, the history from, medical yeah. specialist referred because ultrasound showed some doubtful mass in right adrenal gland.
Okay. So I will take the history from the patient, and I will keep in mind the diagnosis like a phaeochromocytoma. In mind, I will ask further questions as well. So similarly, the Cohen syndrome, the Cushing syndrome, I will ask the clinical features of these diseases from the patient during the history taking. So I will ask about the duration of the symptomatology, whether the patient's taking any medications before, what are the comorbids, and any previous surgical intervention. Okay. And I So would like to ask other symptoms, like if the patient having any sign and symptoms of the malignancy. okay. So she doesn't have any comorbids in the past before this, and there is no past surgical intervention. How will you proceed with the examination? And Okay, so I will obviously this patient having a I will record his blood pressure, right? What is his blood pressure, and then move on to the abdominal examination. And I would like to see whether there's any palpable mass or not, particularly the renal area. And I would like to see the do the systemic examination to find out there any primary malignancy. I would like to examine the breast and the blood pressure, lung. Yeah, blood pressure is normal, and abdominal examination is also normal. blood pressure is normal, but there is a history of a hypertension. Huh? Yes, she medical specialist calls you that she's having high blood pressure, but on your examination, BP is normal and abdominal examination is also normal. Okay, So the how will you proceed? examination of, okay, is there any previous history of malignancy? No, no previous history of No malignancy. previous malignancy, but I will perform I will complete my examination, the systemic examination as well, and then I will move on to the investigations. I will investigate this patient. I would like to review the previous investigation for this patient. Well, she hasn't been investigated. Apart from baseline tests, she hasn't been investigated previously. Okay, so I would request the in this patient's urinary metanephrines and normetanephrines, serum metanephrines, and along with the electrolytes, sodium, potassium, a renal function test. So I would like to review the results. So Okay. So metanephrines are elevated, and what is your next step now? So that means so this patient is having a phaeochromocytoma. So they already ultrasound shows there's a mass in the adrenal side, in the right side. So I would like to see what is the size of the adrenal and size of that mass. And the next step would be to localize it with the help of the CT scan of the abdomen. Okay. Abdomen, yeah. What So else? then I would, yes, I would discuss it with the radiologist to see whether there any, what is the size of the lesion and the adrenal. Is it on the only one side? Or is it, what is the condition of the other left-sided adrenal gland? And uh, is there any feature suggestive of malignancy? What is the size of the lesion? What the Okay, so there is a lesion in the right adrenal, 3 by 4 centimeter. Left is normal. Uh, how will you proceed now? So 3.5. So is there any necrosis or any signs of malignancy? What's the Bones field density of this lesion? No, there are no signs of malignancy. There are no signs of malignancy. So metanephrines, they are raised. So then the next step would be, so this patient would require this surgical intervention, but I would get the input from the endocrinologist as well in this patient. So we will prepare this patient for the surgery, for the laparoscopic How will you adrenalectomy. So first of all, how will you prepare? I will counsel the patient. I inform the patient about the diagnosis and the risk and the complications. And the next step would be to I will coordinate with the medical specialist and the critical care specialist, because this patient will require the uh, control of this hypertension. So most likely this patient we started on the alpha blockers initially, and
the 3 to 4 days before the surgery, it will beta blocker will also be added. And at the same time, so we will require the investigation for the fitness to undergo the surgery. So what surgery are you planning to do? So in this patient, laparoscopic adrenalectomy, because its size is 3.5. Okay, so you are doing adrenalectomy. During the procedure, there is sudden torrential hemorrhage in the operation site. So what can be the reason of that? Also, that means most likely the adrenal vein has been stripped and the patient is bleeding from that side, the adrenal vein, which is draining. So the Adrenal vein drains into what? Right adrenal vein drains into what? right adrenal veins, it drains into the IVC directly into the IVC. Most likely it has been stripped. That could be the possibility of the torrential Okay, so hemorrhage. what will you do? Yeah. What will you So do? so the first step would be I would try, although it's a tense situation, I would try to remain calm, and I will take the gauze and apply the pressure with the over the bleeding site, and I will take the suction catheter and suck it out, and maybe I would like to put in the extra port, and I will once I have applied the pressure, I will call for the help, and most likely I will be requiring the blood as well. So once I have applied the pressure and see where is the bleeding, and I will give the anesthetist the time to just to meanwhile I will arrange the clips and the sutures as well. So if I can localize the site, so then I will skewer it. Otherwise, I may have to convert into open. Okay. Okay, so post-operatively, the patient is well, but on fifth post-op day, there is sudden increased output in her drain, which is placed in the right subhepatic area. Okay. So what is the color of the drain? What is the color of the drain fluid? It is like greenish with small amount of blood. Greenish. So green. So then I would like to see what is the patient condition. Is he having she's having abdominal pain, and what are the vital signs, and what is the condition of the abdominal? Is abdominal soft? Are there in tenderness and distension or not? The patient is clinically stable. She has Oh, tachycardia, otherwise she is stable. she's having tachycardia, and the abdomen is soft. There's no tenderness. No mild tenderness at the operation site. At the operation time. So then I will get the contrast and CT scan to see the collection inside. Okay. Okay, so because of the greenish fluids, that means there's a possibility of the injury to the surrounding structure. Mostly could be the duodenal injury as well. Okay, thank you, Dr. Shwakat. Thank you, Dr. Umar. Sir, जी अपना बताएं. पहले उस्मान भाई. Sir, good approach towards the patient, and initially you readily picked the cause of hypertension, and secondly there is a history of uncontrolled hypertension, so you should also keep in mind Cushing syndrome, Cohn's adenoma, in addition to phaeochromocytoma, along with one should ask about other endocrine problems such as hyperparathyroidism. Sorry, hyperthyroidism. It also causes hypertension and palpitation. You should always examine thoroughly about the neck of the patient, because hyperthyroidism can also present with such symptoms of hypertension, tachycardia, anxiety, and also one need to be aware of renal artery stenosis for uncontrolled hypertension. One should keep in mind, and otherwise it was a good case. Secondly, adrenalectomy
you have done laparoscopic adrenalectomy. So it was a good case defense. Nothing from my side extra. So one thing, so I once this Harry was given, so I responded that I will talk to the medical specialist. What is the suspicion? So the medical specialist suspicions was there's a mass in the adrenal, right? So even then, once I started what are my differentials, my differential were the Phaeochromocytoma, Cones, and the Cushing. So D3 because of he was referred with the suspicion of there's an adrenal mass which was picked up on the ultrasound. Okay. Right. So you're right. So there are other causes of the persistent hypertension which we must keep in mind. Hyperthyroidism. Yes, sir. बाकी इस वक्त तूने इसका ये उस्मान इज राइट थायराइड प्रोफाइल का जिक्र नहीं किया और हाँ थायराइड प्रोफाइल का इसमें जिक्र जरूरी था मेरे ख्याल में। हाँ नहीं बिल्कुल वो तो उसका हाइपरपाराथायरॉइडिज्म भी है ना। वो तो जैसा आपने कहा ना सर, मैंने पूछा कि हाँ आगे ये होता है कि नहीं कोई और नहीं। वो जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट से उसने कहा कि जी एड्रिनल उसकी वजह से उसने रेफर किया ना, तो उस वजह से उसने रेफर हमारे पास किया। तो मैं फिर उस पर रीनल पे चला गया। तो यार राइट, हाइपरटेंशन क्या कॉज है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है, और ये वाला हाइपरथायरॉइडिज्म है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म भी है जो कॉजेज है हाइपरटेंशन की ना। दूसरा ये अपना जब ये इसकी ना राइट बड़ी छोटी सी वेन होती है, ये जब हाँ हमने भी किया था ना एक दफा, तो ये राइट वेन में एवल्स हो जाती है अक्सर उससे आईवीसी से। लेफ्ट आईवीसी साइड पे रीनल में खुलती है, राइट साइड पे आईवीसी में खुलती है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें आपको यूजुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने तो खैर ओपन ही हम करते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली आपको मुश्किल होता है लेप्रोस्कोपिकली इसको कंट्रोल करें। हाँ और दूसरा इसमें फौरन आप वस्कुलर सर्जन को फौरन बुला लें, आप इसमें वेट ना करें उसका। हाँ आप फौरन वस्कुलर वाले को बुलाएं इसमें। तो वेस्कुलर मैंने सीनियर का कहा था, आई विल कॉल फॉर द हेल्प ना, वेस्कुलर नहीं हाँ वर्ड नहीं ठीक बोला। है। हाँ लेकिन ये कि सडनली जो ना मेरा ख्याल है यहाँ ये जो ब्लीड होता भी ना, इट वुड बी, इट्स नॉट कि वाकई वो हो सकता है आपके प्रेशर देते हैं और थोड़े से सेस करते हैं सिचुएशन को। अगर स्ट्रेट अवे अगर जवाब ये दे दें कि जब उसी वक्त ब्लीडिंग का नाम सुने मैं ओपन कर दूंगा, आई थिंक ये भी मतलब अप्रोच ठीक नहीं है। बाकी नहीं सर वो ठीक मिजान है, में कुछ बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख के, जारी बात है हाँ वाइटल साइंस वगैरह देख के, लेकिन हाँ यूजुअली ये एवल्स, हाँ यूजुअली हाँ आईवीसी से एवल्स होती है। ये इतनी छोटी सी होती है ना ये वेन, हम्म हम्म ये एवल्स होती है आपको टाई करते हुए अक्सर ना। बिल्कुल। तो माशाल्लाह शफाकत, एक्सीलेंट केस आपने जो है वो सारा कैरी आउट किया है टिल द एंड। और कोई मोटी बात तो उस तरह से नहीं है मेरी तरफ से, सिवाय इसके कि जब आपने शुरू किया, दिस सिनेरियो वाज ऑलरेडी नोन टू यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ फेयोक्रोमोसाइटोमा। No, यू डिस्कस्ड योर हाँ सर मैंने सिनेरियो दिया ना, सिनेरियो दिया है कि पेशेंट हैज बीन रेफर्ड टू यू बाय द मेडिसिन with hypertension, headache, and palpitation. So then I responded back to the examiner that I will discuss it with the medical specialist. What is the suspicion? So then the examiner told me that this patient has been referred because of the adrenal mass on the right side. एड्रिनल मास, ठीक Yes. है। So then I am suspecting the क्योंकि Yep. मेरे ख्याल में एड्रिनल का जिक्र उसने बाद में किया था, फियोक्रोमोसाइटोमा आपने पहले बोला था। हाँ तो मैं उस वजह से कंफ्यूज हुआ कि शायद केस सिनेरियो पता था पहले से कि डिसाइडेड था कि ये पूछना है। वो मैंने इनसे और मेरे से पहला जो था वो थायराइड की तरफ जा रहा था कि व्हाई नॉट थायराइड। तो वो उसमें सिखलाया हुआ तरीका तो यही है कि अगर इस तरह से ओपन हो, लाइक आपको आइडिया ना हो, ये तो केस रेफर्ड था, तो फिर आप हिस्ट्री से शुरू करें, हिस्ट्री एग्जामिनेशन से। इसमें भी सर मैंने हाँ इसमें भी इस तरह किया ना कि ये इवन उन्होंने कहा कि ये रीनल पे उन्होंने रेफर किया है, तो फिर आई विल टेक द हिस्ट्री कीपिंग इन हाँ, माइंड। रेफरल तो चीज और क्लियर हो जाती है ना कि डायरेक्टली वो जिस वजह से आपको रेफर कर रहे हैं, कुछ तो इन्वेस्टिगेट उन्होंने भी करके भेजा है ना आपके पास। हाँ तो मैंने उसको ये रखा था, मैंने बेसिकली जो जिस हिस्ट्री भी जो मैंने पूछा ना उनसे, फियोक्रोमोसाइटोमा, कोन्स, कुशिंग और मेट्स, इन 4 चीजों को मैंने माइंड में रखते हुए हिस्ट्री का वो चीजें जो पूछी। बेहतरीन बेहतरीन चला, आगे का तो सारा बेहतरीन चला। तो एनी अदर थिंग जब तक लास्ट सिनेरियो हमारा हो जाए सर नुमान, चल यार मेरी नहीं, बात और कोई चीज इसमें ऐड करें लास्ट में। चलने पे अभी उस्मान पूछेगा सर नुमान से ना। जी सर। इट्स योर टर्न नाउ सर, you have a 38 years old female presented to with refer to you from nephrologist
with history of recurrent renal stones and on and off abdominal pain and generalized body aches. How would you proceed with this case? Okay, so I will first take history from this lady who is 38 years old, that since when she is having abdominal pain, and what are the aggravating and relieving factors of the pain, and what is the site of the pain, and what is the radiation and characteristic of the pain and its severity, and Okay, she has is it generalized abdominal pain on and off, and it has nothing to do with food intake. okay? And as you have said that he sent me because of renal stones, so I will ask since when she is diagnosed with renal stones and what investigations have been done in the past, and For who last 10 has. years, she has been diagnosed with renal. She has undergone multiple events, sessions of lithotripsy, but again, there is persistent recurrence. So I will ask her that whether there was any chemical analysis of the stones or any other investigations to identify the cause of recurrent stones, or any surgical intervention in the past. Yes, she has been undergone investigation, and her parathyroid levels and calcium levels are raised. Okay, so likely she is having primary hyperparathyroidism, and because of that she is having recurrent renal stones. And I would like to complete my history by asking about any comorbids, any previous surgeries, or any history of drug intake, or is she a smoker or not, or family history of any such diseases. I will complete my history, then I will move on to examination. I will examine the lady. I will examine her abdomen thoroughly, and I will also examine her neck. Abdominal examination is normal, ultrasound is normal, and she has a swelling 1.1 centimeter in his anterior aspect of her neck. Okay, so next I will like to do lab tests as well as radiological tests. In lab test, I will send baseline investigations. In addition, I would like to check the electrolytes like calcium, sodium, potassium, magnesium, and along with that, I would like to see her RFTs, renal function tests, and Her calcium level is markedly raised, and her urinary creatinine clearance to calcium to creatinine ratio is increased, and she has a uh, 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 on chemical analysis of stone, they are calcium stones. okay. So next, I would like to do a radiological investigation. I would like to get an ultrasound of the neck and ultrasound of the abdomen as well. Ultrasound of the abdomen to see the renal stones and their location, their size, and the pressure effects on the kidneys and other And structures. ultrasound neck reveals a 2 into 2 centimeter mass uh, behind the right lobe of thyroid gland. Okay. So I would make my diagnosis of parathyroid adenoma, and I would like to do further imaging tests to localize the adenoma. Which test would you like Uh, to do? I would like to do cyst amoeba scan uh, to localize the adenoma, and Okay, system maybe scan has not been able to identify the exact adenoma. What next? okay. So I would like to get a four-dimensional CT scan of the neck along with MRI of the neck as well, in an attempt to localize the tumor. Okay, MRI revealed that there is a superior parathyroid gland is enlarged on the right side. What would you do Okay. now? So I would like to discuss. I would like to consult the patient regarding surgery, that she will need surgery for her parathyroid adenoma and we need to manage her renal stones as well. First, I think we need to address the parathyroid adenoma, which is the cause of this hypercalcemia and the stones. So I would like to consult the patient regarding neck exploration and removal of the adenoma, and I will discuss the case in a multidisciplinary team meeting
with head and neck surgeon and anesthetist regarding her surgery, as this is a major surgery, and we will And be very intraoperatively, you have removed adenoma. How would you confirm that this was the right thyroid gland you have removed? I will. How will I confirm it? Yes. That this Sorry, adenoma was the cause of hyperparathyroidism. Sorry, I don't know the answer. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so इसमें आपने you went very well. आपने started with the history, then physical examination, and once the examiner told you that the calcium is raised and the PTH level is also raised, along with there's a lump, there's a swelling which has been identified in the ultrasound of the neck. So the maybe scans, the next step you ask in maybe scan, no? And then I heard that आपने MRI का भी जिक्र किया, MRI of the neck, और examiner ने भी बताया कि MRI पे pick हो गया. तो पैराथायराइड जो MRI जो है ना, MRI is for the chest. If you are suspecting it mediastinum के अंदर हो सकता है. MRI वहाँ पे जो neck के अंदर है ना, posterior aspect होते हैं, ये pick नहीं होते MRI पे neck की. MRI है chest के लिए. अगर आप ये suspecting है mediastinum के अंदर होगा तो फिर MRI किया है फायदा करवाने का. तो suppose सर यही scenario है. I give you the scenario. आप दो तीन ultrasound पे yes there is a nodule posterior in the posterior aspect of the thyroid, right thyroid lobe. Maybe scan is also positive. So what will you do? What will your next step? दोनों पे आ गया. Then we will go for exploration. Okay. So again वही आगे explore की आपने, तो आप क्या करेंगे? Which exploration? Which incision you will make? Where will you make incision? Transverse neck incision. Where? Transverse neck and extending from about 2 to 3 centimeter above suprasternal notch, extending from you can say anterior border of sternocleidomastoid to the other. So it's a 4-gland exploration, not the focused parathyroidectomy. So once you have identified, yeah, this is the parathyroid adenoma. So then the best option is going for the focused parathyroidectomy. So just to make a 3 centimeter incision, mark it with the ultrasound, and make a small incision, and directly you will approach this adenoma. So the question was, how will you confirm that it had been adenoma has been excised or not? So you get the PTH level intraoperatively and intraoperatively PTH level. PTH. So आपके जो जब आपने remove किया, इसकी half life होती है PTH की 3 to 5 minutes. ठीक है? तो after 10 to 50 minutes आप इसके PTH level कराते हैं तो 50% उसकी reduction हो जानी चाहिए as compared to the pre-operative level. एक तो आपका ये होगा, प्लस आपका फ्रोजन सेक्शन भी भिजवाते हैं इसको. तो सपोज आपने ये निकाल दिया, पीटीए लेवल्स दे हैव नॉट ड्रॉप्ड, उसकी परसिस्टेंट सेम वैल्यू आ रही है. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? Go for 4-gland exploration. Then we'll go for the 4-gland. तो ये क्या रीजन हो? What could be the cause? कि अल्ट्रासाउंड पे there was nodule, maybe scan there was nodule. What could be the cause? There may be hyperplasia in the other glands. No, sir, right पे the maybe scan has picked up this nodule, and ultrasound there's a nodule. So what could be the cause? We have removed the wrong parathyroid. नहीं, इसमें से जो मीबी स्कैन जो करता है ना, मीबी स्कैन क्या होता है, ये कंसंट्रेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो जो सेल जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उसमें फिर उसको वॉश आउट होते हुए टाइम ज्यादा लगता है. ठीक है? जो पैराथायराइड एडिनोमा होते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं, ऑक्सीफिलिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ज्यादा. तो मतलब ऑक्सीफिलिक सेल्स ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है. तो जब मीबी उसके अंदर जाएगा तो उसको टाइम लगेगा वॉश आउट होते हुए. ठीक है? ये इसकी है जो बैकग्राउंड है. जो हर्तर सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर जो लियन जो थायराइड के अपने में नड्यूल जो है, उसके अंदर भी हर्तर सेल, उसके अंदर भी ऑक्सीफिलिक सेल्स जो होते हैं और उसके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं. तो वो आपको मीबी स्कैन जो ना थायराइड नड्यूल वाले भी लगे, फॉल्स नेगेटिव. ठीक है? हर्टलेस सेल्स ट्यूमर होगा मतलब, या वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थायराइड, हाँ यस. तो थायराइड जो है ना, तो ये हो सकता है कि वो
आपको जो नड्यूल है ना वो उसका हो सकता है, जो इसकी फॉल्स ठीक फॉल्स नेगेटिव भी हैं जो रेट आती है, ठीक है फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव रिकरेंट अगर है, ठीक रिकरेंट डिजीज में अगर आप करते हैं ना मीबी स्कैन, तो उसकी एक तो लोकेशन होती है कि पोस्टीरियर की ऐसी लोकेशन पड़ा हो तो वहां पे ब्लड फ्लोज की नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो वो भी आप पिकअप नहीं होगा। रिकरेंट डिजीज में वैसे रेमनेंट वो थोड़ा होता है, उसमें भी मीबी स्कैन के ऊपर पिकअप नहीं होता है। तो ये ठीक है इसकी फॉल्स नेगेटिव और पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव अगर थायराइड नोड्यूल उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, और फॉल्स नेगेटिव है जिसमें रिकरेंट डिजीज है और पोस्टीरियर लोकेशन में पड़ा हुआ है, तो लोकेशन ऐसी है तो वहां पे उसकी ब्लड फ्लो बाकी उससे रिलेशन, तो उस वजह से फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता ठीक है। अच्छा, है। ठीक इसमें है। एफएनएसी का रोल तो नहीं है कोई, या है? एफएनए का रोल नहीं तो नहीं सर, है कोई? नहीं, एफएनसी का रोल नहीं है। एफएनएसी के नहीं है, एफएनएसी के नहीं है। तो बाकी ठीक है। आपने यूवेंट, अच्छा मैं एक और गिव यू सिनेरियो, अदर सिनेरियो। सो कैल्शियम इज रेज बट पीटीएच इज नॉर्मल। So we will look for other causes of hypercalcemia. We will look for thyroid profile. We will look for hyperthyroidism. नॉर्मल। We will look for any. We will look for any malignancy which can cause hypercalcemia. ओके। Any. We will look for फॉर एग्जांपल व्हिच मैलिग्नेंसी? multiple myeloma is a condition which causes, and lymphoma also causes hypercalcemia. ओके। Lymphoma and leukemia also मेटास्टेटिक causes मैलिग्नेंसीज, यस। metastatic malignancies, lymphoma, leukemia, multiple myeloma. तो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो वो करवाते हैं इसमें ना, जो अच्छा, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है ना वो करवाएंगे। तो वो अगर रेज आए तो इस पाथवे में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो भी नॉर्मल आपके आगे, देयर इज नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, को प्रीवियस कोई हिस्ट्री पे नहीं है उसका कोई, फिर then other देन rare causes like क्या कहते हैं उसको, मिल्क अल्कली सिंड्रोम वगैरह, जो ड्रग्स, कुछ ड्रग्स तो खैर कुछ मिक्स करती हैं, जैसे वो कौन सी ड्रग करती थी यार? लिथियम। लिथियम, हाँ, हाँ लिथियम लिथियम। करती है। और अच्छा उसमें क्या विटामिन डी लेवल करवाएंगे आपने, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। अगर ये रेज आते हैं तो इसमें विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन है, वो भी नॉर्मल है, विटामिन डी लेवल भी नॉर्मल है, तो 125 हाइड्रोक्सी जो वो करवाएंगे विटामिन डी है ना। ठीक है। ठीक है। तो वो भी अगर नॉर्मल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसमें आ जाती है ये वाली चीजें जो है ना, जिस तरह अभी आप बता रहे थे ना सर, मल्टीपल माइलोमा हो गया, ड्रग्स हो गई, ये चीजें फिर आ जाएंगी दूसरी वाली कॉजेज है ना। तो और ठीक जो है। और ये स्टार्ट पे जो कराना है इन्वेस्टिगेशन तो बोलनी है कि जब आपने हो गया कि कैल्शियम ज्यादा हाइपर कैल्सीमिया, तो आपने बोलना है कैल्शियम। हाँ दूसरा इतने कैल्शियम सैंपल किस तरह लेंगे, क्या बताएंगे, क्या इसकी केयर क्या होगी? इसमें तो हम टोटल कैल्शियम ही कराते हैं ना। टोटल कैल्शियम किस तरह, टोटल कैल्शियम? केयर क्या होती है, मुझे नहीं पता। हाँ उस्मान। नहीं सर, मुझे भी नहीं पता इसका। अच्छा कैल्शियम करेंगे, टोटल कैल्शियम साथ एल्ब्यूमिन आपने लाजमी करवानी है, करेक्टेड कैल्शियम उससे हाँ, निकालें। ठीक है ना। क्योंकि ठीक है। ठीक है। सूडो हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, हीमो कंसंट्रेशन है, या पीएच चेंजेस हैं, तो उसमें अंदर एल्ब्यूमिन उसकी जो इन चेंजेस की वजह से कैल्शियम आपको टोटल कैल्शियम जो ना फॉल्सली वो रेस नजर आएगी। ठीक है। तो उसमें करेक्टेड कैल्शियम करते हैं, कैल्शियम अलॉन्ग विद एल्ब्यूमिन। तो उसमें फिर एल्ब्यूमिन। आप, हाँ तो उसमें फिर जो आपकी वैल्यू आई है कैल्शियम की, उसको +4 प्लस आप एल्ब्यूमिन के जो लेवल वो ऐड कर लें, जो सीरम एल्ब्यूमिन है, मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये करेक्टेड उसके आएगा मिलीग्राम उसमें आएगा पर डेसीलीटर में। ठीक है। तो अच्छा, करेक्टेड ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम लेना किसने, टॉर्निकेट नहीं लगाते, 6 आवर्स के एनपी होना चाहिए पेशेंट को, थायराइड डाययूरेटिक्स या लिथियम वगैरह कोई ड्रग्स ऐसी ना ले रहा हो। और इसी तरह पीटीएच लेवल वो किस में करते हैं, पीटीएच होता है 10 बजे एक सैंपल होता है, एक 4 बजे सैंपल होता है जो लेते हैं, 2 सैंपल इसमें लेते हैं। और इसको जो करते हैं ना रखते हैं, अगर आपको रखना पड़ी जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हैं स्पेसिमेन को ना। और दूसरा इसका जो लेवल है ना 85 पिकोग्राम, कुछ लैब का होता है, कुछ डिफरेंट भी होते हैं वैल्यूज है ना। तो आपने करा लिया सीरम कैल्शियम, पीटीएच लेवल करवाए, विटामिन डी लेवल, फास्फोरस लेवल, और उसके साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है बाद में पोस्ट ऑपरेटिव दिस पेशेंट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ द हंग्री बोन सिंड्रोम, अगर किसी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा आ रहा है। तो आप ये बड़ी चीजों को साथ में उसके बाद फिर ये अब आगे जब हमने कर लिया कि यस नॉर्मल कैल्शियम इज रेज, पीटीएच इज रेज,
बट विद नॉर्मल विटामिन डी लेवल, लो फॉस्फेट लेवल, ठीक है। तो ये आप सही उसमें है। आ जाएंगे, ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म है। फिर आपने यू नीड टू डिफरेंशिएट वेदर इट्स टर्शरी पैरा हाइपरपैराथायरिज्म, वो तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री हो जाएगी। फेमिलियर हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, उसमें हाइपर आपको कैल्सीमिया, 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम करवाना है, उसमें ठीक। 24 यूरिन कैल्शियम कराना है। यूरिन कैल्शियम और क्रेटिनिन क्लियरेंस, ये कर लिया आपने। जब आपने वंस यू हैव रूल्ड इट आउट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई इज देयर एन इंडिकेशन फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, इंडिकेशन भी है कि नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक है तो यस, एसिम्टोमेटिक है तो अगेन वो एक चार्ट भी बना हुआ बेले के अंदर, तो वो आप उसमें चले जाए। फिर आपने यू नीड टू चेक वेदर इट्स ए पार्ट ऑफ फेमिलियल सिंड्रोम, वो तो नहीं है। वो किस तरह सस्पेक्ट करेंगे, उसको फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली प्रीवियस हिस्ट्री। पेशेंट लेस देन 35 है या लेस देन 45 है, और आप उस पे आ रहे फैमिली हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड हाइपरपैराथायरिडिज्म, जिसमें आपने जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह भी करवाई, उसमें हाँ जी। यंग पेशेंट है तो उसमें जरूर जो नाम नहीं करना है कि ये आपका इसमें मेटानेफ्रीन लेवल्स और नॉन और ये मेटा, मैन सिंड्रोम का एसोसिएशन है ना। वो बिल्कुल वो करना है, ठीक है। और जब ये आपने कर लिया, तो वंस देन यू स्टार्ट अप विद लोकलाइजेशन स्टडीज। आपने ये ऊपर तक लिया है, एल्गोरिदम पे आए, फिर आपने हाँ जी। लोकलाइजेशन है, पहले आपने बायोकेमिकल उसको क्लियर करना है, हम्म हिस्ट्री एग्जामिनेशन बायोकेमिकल डायग्नोसिस, देन इज द लोकलाइजेशन विल बी हम्म, स्टार्टिंग विद अल्ट्रासाउंड नेक एंड मीबी हाँ स्कैन। जी। दोनों अगर अगर इनमें दोनों आ रही हैं, दोनों एक ही जगह पे बता रही है, अल्ट्रासाउंड भी बता रहा है और मीबी स्कैन भी एक ही जगह हम्म बता रही है कि यहाँ पे एडिनोमा पड़ा हुआ है, तो देन यू गो हम्म, फॉर द मिनिमल इन्वेसिव पैराथाइटिक। अगर हाँ, बीच में आ रहे एक बता रहा है एक या नहीं है, तो देन यू गो हम्म फॉर द 4D सीटी स्कैन। वो किस तरह करते हम्म। हैं? वो तो मेरा ख्याल है गैलियम लेबल्ड जो है ना, आइसोटोप लेबल्ड नो नो एक्सपेक्ट स्कैन, एक नो 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 नो, एसपीईटी। 4D सीटी स्कैन। एक तो रेडियो लेबल्ड सिटी स्कैन होता है ना, जो नो नो स्पेक्ट नो स्कैन जिसको कहते हैं। नो नो नो, 4D सीटी स्कैन। 4D पता नहीं सीटी करते स्कैन क्या, इट्स अ सीटी स्कैन जो नॉर्मल हम सीटी स्कैन करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, एक लेंगे प्री कंट्रास्ट विद आर्टीरियल फेज लेंगे, वीनस फेज भी और डिलेड फेज भी लेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी जो वॉश आउट है उससे पता चलता है कि जी कि आप कुछ लिम्फ नोड्स हैं उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होती है, इस तरह इनहेंसमेंट आती है इसमें। प्रॉब्लम इसकी है कि इसकी रेडिएशन डोज जो है ना वो बढ़ जाती है, अच्छा। ठीक है। अब आगे बात हमारी कि ये आपने ये कर लिया 4D सीटी स्कैन के ऊपर, इसके ऊपर भी अगर लोकलाइज नहीं हुआ ना, तो देन यू गो हम्म फॉर दी 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन हम्म, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सही है। अच्छा, आगे आगे बात है रिकरेंट है, कि आफ्टर 6 मंथ्स के बाद पेशेंट आ गया, उसके कैल्शियम बढ़ना शुरू हो गया, पीटीएच लेवल बढ़ना शुरू हाँ, हो वो बात होगा, ये बताया आपने 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन की है, फिर भी बढ़ गए उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली। गया। बिल्कुल बिल्कुल, इट कुड बी बिकॉज़ एक्टोपिक एक्टोपिक एडिनोमा हो सकता है, थाइमस के साथ पड़ा हुआ कुछ है, भी हो सकता मेडिस्टेरिनम है, में हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर होता है जो आपकी ये बाकी तो nutrition आपने खा ली, उसमें फिर आपने करना है सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग, जो आपने हम्म, की पैराथायराइड जो वीनस है, उसमें किस तरह करते हैं जी, फेमरल वेन से जाते हैं, फोर ठीक है। फ्रेंच की शीट होती है, और उसके ऊपर गाइड वायर और चले जाते हैं ये आईवीसी से ऊपर जो है ना ब्रेकियोकेफालिक वेन। और आप ये करने से पहले आप क्या करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन के हम्म ऊपर जो वेस्कुलर एनाटॉमी उसको आइडेंटिफाई वेज सुपीरियर थायराइड वेन, वेज हम्म इंफीरियर जो थायरोसराइकल ट्रंक कहाँ पे है, इन सबको मार्किंग कर लेते हैं। मतलब C3 जो वर्टिब्रा है ना, C3 का लेवल, वो सुपीरियर थायराइड वेन है यूजुअली, ठीक है। ठीक है। C5 ये पहले मार्किंग कर लेते, इस लेवल पे भी इस पे हमने सैंपल लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह इधर C7 पे और बिलो द C7 उस लेवल पे जाकर कैथेटर जब वहां पे जाते हो तो आप सैंपल लेते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 20 मिनट का 20-30 मिनट का प्रोसीजर है ये। तो सैंपल लेते जब एक वहां से आपने स्पीरियर थायराइड, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, स्पीरियर थायराइड हम्म जो वेन है वहां से सैंपल लिया, और एक आपने इधर से ले लिया जो आपके ब्रेकियोकेफालिक है, इनका पीटीएच ग्रेडियंट निकालते हो और सैंपल को हर एक को लेबल करते हैं, जैसे स्टेशन होते हैं ना, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल है कि 8 के साथ है, और जो सिलेक्टिव सुपर सिलेक्टिव कह लें 16 स्टेशन होते हैं, उसमें हर एक में सैंपल्स उसमें नीचे आए आ जाए, ये मिडिल थायराइड वेन अभी यहाँ से सैंपल ले, हम्म और उधर से आपने कंपेयर कर लिया जो ब्रेकियोकेफालिक वाला उसके साथ। तो टू फोल्ड सही है। अगर पैराथायराइड ग्रेडियंट है तो दैट मींस यही जगह यहाँ पे एडिनोमा पड़ा। हम्म, तो ये होती है पैराथायराइड जो वीनस सैंपलिंग है, सिलेक्टिव वीनस सैंपलिंग करते हैं सही है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते लेकिन ये उस तक करते हैं जब ये 4 थराइड वाला 4 ग्लैंड हैं। रिकरेंट, एक्सप्लोरेशन हो। नो 4 ग्लैंड नहीं, रिकरेंट रिकरेंस हो अच्छा। उसमें करते हैं। क्योंकि आपने प्राइमरी क्या। के अंदर नहीं रिकमेंडेड नहीं है प्राइमरी, क्योंकि इसकी अपनी मॉर्बिडिटी और उसके रिस्क हैं।
जो कि आप जो कि गाइड बार जा रहा है, बाकी सारा पूरी वेन के अंदर से तो कहीं पे हेमरेज हो सकता है और मसले मसाइल जो है ना, ठीक है। कंट्रास्ट की रिएक्शंस हैं, तो ठीक है, तो ये था इसका जो है ना। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, जो एनल एनास्टोमोसिस के लिए सर्कुलर स्टेपलर यूज होता है, इसका क्या साइज होता है नॉर्मली? 30-28 कितना होता है ये जो लो एग्जैक्ट जो है एनास्टोमोसिस ना, के इट लिए? डिपेंड, हाँ, लो एनास्टोमोसिस जो है ना, हाँ, वो एग्जैक्ट में पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। वैसे एक एडल्ट का? अडल्ट का जो ना, मेरे ख्याल मैं कोई गलत ना बताऊं, ये मैं चेक करके जो ना उसको बता दूंगा, गलत ना बताऊं, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह जो लीनियर स्टेपलर होता है, इसके लिए हाँ, ड्यूडेनम को मुझे एक्सक्लूड 60 वाला जो है ना, 60 ज्यादातर चल रहा होता है जो नॉर्मली ना। 80 होता है जो आपने बड़ा एनास्टोमोसिस बनाना है, 80 बना जनरली 60 जो है ना। 60 वाला, 60 क्या, ये तो 60 हाँ, इसका? तो मेरे ख्याल पे खत्म करते हैं फिर, हैं? जी सर। ठीक है, फिर नमाज भी चले गए, तो चले आज के हमारे हो गए 3 सिनेरियो। हाँ, एक जी सर। फियोक्रोमोसाइटोमा वाला, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह फिर ठीक, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चलो सर, ओके।